Good morning all. अरे किधर है? जल्दी आओ. Come quick. सुबह हो गई. जागो ग्राहक जागो. Come on. Good morning. Good morning. Yes, Shobit, good morning. Nice. Hey, Asare, शीघ्र आसो. We are ready to launch. ठीक है? Now, our today's agenda, today's topic is, as you can see, the animal kingdom. ठीक है? Now, we need to understand, know about animal kingdom pretty well. First of all, we all are animals too. है ना? हमें मध्य animals ना. तमें काली I think पढ़िचो classification. Yes. Classification हिसाब रे यदि humans मानकर classification करिबा तो कैसे करेंगे? Kingdom Animalia. Yes. Phylum. Yes. Chordata. Good. Then class क्या होएगा? Mammalia. Yes. Okay. Fine. Order कौन होगा? Yes. Primata. Good. फिर family. Hominidae. Good. Genus. Homo. Species. Sapiens. See. So ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ classification ଅଛି. Yes. Now, in order to understand our own organization, माने आमे केमती theory ହେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ କୋଉ tissues ଅଛନ୍ତି, systems, organs, ठीक ଅଛି, ଆମର behaviors, ठीक है, our habits, mechanisms, life processes, ସବୁ ଜିନିଷ. So ଆମର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, in order to understand that, we'll have to compare us with others too. Kahenki? Because animal kingdom gives you two things. First, it gives you an idea about what are the other groups of animals that exist on earth. One. So that we can compare among us how different we are to others. Secondly, it gives us an idea about the complexity of organisms and their degree of evolution. Mane, from the lowest group of animals till us, the highest group of animals, there is a classification. There's a classification. Fine. So, Seiji Bhai, it's very, very essential that you understand the whole idea. Okay? Not only in terms of education. Thank you. Eta janle tame dekhibo, knowing the other chapters related to human physiology, cell, etc. become important. Even second year rate, things like reproduction, evolution also become easier. बुझला? तो आपके लिए डबल फायदा है. Then since we are studying for the purpose of NEET examination, so NEET re madhya animal kingdom ro weightage is 3 to 4 questions. Mane around 20 marks highest. Minimum 16 to 20 marks tomorrow NEET exam ro weightage. ठीक है? तो 16-20 marks ro weightage mane, imagine rank can shuffle between 20 to 30,000. 20 mark ro difference mane rank can shift 20,000 to 30,000. It's a khatarnak competition. So I just hope by studying sincerely, tamane sabuja questions kari paribo and your rank will become in the top list. Right? Chalo, theek achi. So without wasting any more further time, let us begin then. ठीक है? शाबाश. लक्ष्मण, sapiens, हाँ. दे रहा है, दुरुस्त है, बढ़िया है भाई. चलो, keep the enthusiasm रखो सेमती.
and let us begin then. ठीक है भाई, चलो. Okay. So in the animal kingdom, you must have already seen these things. ये जिनसे गुड़ी को already जानी थी वो तो हम माने पढ़ाए होंगे आपको already. Okay. So regarding the various constitution etc. Just for a remind कर दियो. Let us just quickly run through these slides. देखिए for a better understanding and proceed. Animals, multicellular, heterotrophic organisms without any cell wall or any chlorophyll. So animals मानकर no cell wall, no chlorophyll कहेंगे हमें heterotrophic organisms, ठीक है? And we have a multicellular organization. Unicellular animals exist करती नहीं. Remember this, ठीक है? So the phyla which are involved, जो हमें पढ़ीवा, okay, all these are the various phyla in it. Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminths, Ashhelminths, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. All are the phyla that we will be studying. ठीक है? Now, look at the levels of classification. Cool levels of classification by chemity. I mean levels of classification. Just look at it quickly. ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रे कौन कौन है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स. बॉडी सिमेट्री फाइन, जर्मिनल दैट इज एम्ब्रायनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है. देन सिलोम, whether it is acylomate, pseudocylomate, eucylomate, etc. Metamerism माने segmentation, true segmentation, false segmentation, partial segmentation, etc. Notochord, যদি notochord ଅଛି তাহলে chordata, नहीं तो non chordates. ठीक है, fine. Now based on the organization, levels of organization, cellular level of organization अछि, tissue level of organization अछि, organ level of organization अछि, and organ system level of organization अछि. ठीक अछि. Now these are the things we have already studied. ମୁଁ just କେବଳ quickly ଏଇ ଜିନିଷଟା recap କରୁଛି. Today's agenda, our today's topic is Porifera, yes, Cnidaria and Ctenophora, phylum. So I am just quickly running through the various things that you have already studied. आगुरु पढ़ी सारी चो, but quickly एक बार revise कर देने से when we start with the Porifera, it will be easier for you. So that's why a small request to all of you, all you people. ठीक है, बच्चा लोग क्लास मिस मत करो, फुल जोश रे क्लासेस अटेंड करो, सीखो, जानो, and after the classes are done, read through your references, solve questions. There is सबुदिन अल्प अल्प करी करियो, then believe me, this will become very simple, very easy and comfortable. ठीक है, but classes miss मत कीजिए because we give a lot of effort for you people so that you can be benefited out of it. ठीक है, okay. See here, levels of organization. For example, I have shown here. Look at it. Cellular level. जोटा कि हमें आज ही पढ़ी बा. ठीक है, क्या? Porifera. Yes. Then tissue level. Again आज ही पढ़ी बा. That is cylindrics, Cnidarians and Ctenophora. वो उसमें आ जाएंगे टिश्यू लेवल. तो आज ही हमें सेलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल ही देखिएगा. ओके, वी लुक इनटू सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन and tissue level organization. Okay, then यहाँ पे देखो, when you look at the levels of organization, the circulatory mechanisms, 11. आशुतोष रूम में
Okay. Then in terms of symmetry, fine. So symmetry, either it is asymmetrical as you can see. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ organism को ଦୁଇଟି part ରେ divide କରିବା ସେ ଦୁଇଟି half ଯଦି match କରୁଛି then we can call them symmetrical. ठीक है, ये हुआ basically symmetry. ତା ଦେହରେ କେମିତି different types of symmetry ହେଲା. Suppose ଆମେ ସେଇ organism को केवल गोटिए plane रे divide କରି परिबा ଆଉ जो पटे काटुचो काट से इक्वल हेबे नाही तो बायलैटरल सिमेट्री है. यदि से ऑर्गेनिज्म को कौनसी प्लेन ने काटिले मध्य से इक्वल शेप फॉर्म करिवो ताले रेडियल सिमेट्री हैला. वेरी सिंपल. एंड यदि कौनसी साइड रो काटुचो काट इक्वल हबो नाही तो असिमेट्री हो गया. बुझिएला कथाटा. इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इन इट. ठीक है, फाइन. See radial symmetry, bilateral symmetry, okay. Same basis रे our different sides formula. Dorsal side जैसे पिठी डा, the पिठी side, पिठी पटो को कौन को आ जाए dorsal side, पेटो पटो कौन को आ जाए ventral side. ठीक है, सामने को कौन को आ जाए anterior, पछू कौन को आ जाए posterior. ठीक है, एम्ब्रायनिक जर्म लेयर्स देखो, डिफरेंट लेयर्स अछंदी. आउटर एक्टोडर्म, मौजी मेसोडर्म, देन एंडोडर्म. ठीक है, फाइन. तो जदी ऑर्गेनिज्म रे दुईटी जर्म लेयर्स इन्वॉल्व अछंदी ताले सेटा ला डिप्लोब्लास्टिक. ये तीनोटी इन्वॉल्व अछंदी ताले डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. सॉरी. ठीक है, सेम द सिलोम देखो. सिलोम इंप्लाइज बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी जेतेबेले गोटे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म रो फॉर्मेशन हेता है मेसोडर्म जो मौची लेयर अछि से स्प्लिट करी जो जेते स्प्लिट करिवो because of the splitting, okay, because of the splitting the mesoderm will form two layers, गोटे outer layer गोटे inner layer. तो outer और inner layer मौजी रे गोटे gap create है वाला. That gap is known as the coelom, the cavity. Got the point? You can see here outer mesoderm, inner mesoderm, मझिरे gap. That gap is called coelom. Okay, जो मानकर coelom अच्छी वो हो गए coelomet, जिनका नहीं है तो ना coelomet. और जो मानकर partially divided form रे अच्छी बा irregular अच्छी वो pseudocoelomet. क्लियर? अरे बच्चा समझा? बुझिल रे? Is that understood? Is that understood? Shabash. Very good. Good. ठीक. Okay. No, it's a good thing. आप लोग आंसर दे रहे हो, सब लोग बोल रहा है, you're participating. I'm very happy with it. ठीक है, इसका मतलब सबने सही से पढ़ा है. It's a very good thing. Yes, शाबाश. Pseudocoelomet, शोभित. Yes. बुझे थे भी. कौन? ओके 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 ओके. ठीक ठीक ठीक. ओके शोभित, आपने पूछा pseudocoelomet. फाइन. ठीक, देखो. Let's see pseudocoelomet यहाँ पे. Okay. Now, pseudocoelomet by false coelom क्या होती है देखो. This is the pseudocoelomet. एटा है तुम्हारा pseudocoelomet. ठीक है. Now, why do we call it pseudocoelomet? Let's see. First thing is pseudo माने false means सेटा सिलम भली देखिबा पाई लागिवो बट सिलम होगा नहीं. बुझेला?
false माने कौन? It is not actually present, but दिखने में सिलोम जैसा लगेगा. That is what you call pseudosilom. ठीक है? तो होता कैसे, बनता कैसे, देखें. Look at it. एटी outer ectoderm present अछि, inner endoderm present अछि. Mesoderm जोटा की continuous थिबा दरकार, वो continuous ना होके has developed into small pouch like structures. ठीक है, continuous ना हो कि discontinuous है. As you can see, compare करो, एटी mesoderm देखी पारुछो. Yes, this mesoderm, outer mesoderm, inner mesoderm, दुईटा को कौन कंटिन्यूअस अछंती, कंप्लीट. इसमें देखो, they are not continuous, means they do not completely line the inner part of ectoderm or the outer part of endoderm. So continuous नुहंती, rather सेमाने irregularly pouch body structures form करछंती. ता simple माने कौन? The mesoderm has not split. The mesoderm has not split properly. जेहेतु mesoderm properly split है ही नहीं, therefore the coelom is also not complete. Okay, but the body cavity is not lined by mesoderm. Correct. Mesoderm is scattered in pouches. ठीक अछि. तो ये जो pouch रहिला तमरो, ए पाउच मानकर मझिरे मझिरे ए जो जागा रहिला, look at this, मझिरे मझिरे जो जागा रहिला, ए जो जागा दिसुची which I have now highlighted, ए जो जागा गुडी को मु तुमको हाइलाइट करली. ठीक है, ए जागाटा it behaves or acts like a cavity. Okay, so mesoderm द्वारा फॉर्म है ही नहीं, किंतु कैविटी भली काम करूची, सेहिति पाई एटा सिलम भली तो लागुची, किंतु सिलम नुहे. Since it appears or functions like coelom but is not actually formed by the splitting of the mesoderm, therefore we term it pseudocoelom. अरे बुझिलु रे, समझ में आया रे बच्चा? शाबाश, बहुत बढ़िया. ओके, ठीक. इसके एग्जाम्पल में कौन है? राउंड वर्म्स बा, एश हेलमेंस और नेमाट हेलमेंस. बुझेला? मैं एश हेलमेंस को नेमाट हेलमेंस को बा राउंड वर्म्स कोई था एक का जिनसो. एंड रिमेंबर, टोटल एंटायर एनिमल किंगडम रे केवल गोटिए ही ग्रुप अछि जार ए सुडोसिलम अछि, आ कहार नहीं, नो वन. ठीक है. हाउ प्रेजेंस हेले नोटोकॉर्ड रो, विल कॉल देम कॉर्डेट्स, न रहले नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. ओके, इसको पहले रिमूव करें. ठीक, फाइन. So these basic ideas you already knew. Jodi kar konosi prakar doubt achi in those basic ideas, please ask quickly. Otherwise, I'll start with the phylum Porifera. Does anyone have any questions on the previous? No, just basics. Go fundamentals like symmetry kono, no, coelom kono, diploblastic kono, cellular grade organization, tissue grade organization. Then organ grade organization, organ system grade organization, these are all basics, right? So for better understanding of the things that are ahead of us, so does anyone have any questions on this? Agar hai, to पूछिए. Okay, segmentation, good. ठीक है. Shobhit,
Okay, segmentation. देखो. Now basically segmentation माने हला when the body is divisible into parts or segments. ताहले हमें तो segmentation कहता हूँ. बुझ पालो रे. If your body can be divisible into segments, then we call it segmentation. ठीक है? 8 देखो. Let me show you the things you'll understand. Because देखिले better जानिबो. See here. This is metamerism. Now, many people get confused between metamerism and segmentation. जिनसटी कौन भलो आरे बुझो. Segmentation means the body is divisible into segments or sections. ठीक है. जमती फॉर एग्जांपल हम खुद को देखते हैं. लेट्स सी आवरसेल्फ फर्स्ट. हमारा बॉडी रे सेगमेंट्स करियो कौन होबो. पहले मुंडी आएगी, हेड. ठीक अछि. देन आया आपका नेक रीजन. यस. देन आएगा आपका थोरैक्स रीजन, चेस्ट. तापर आसीबो एब्डोमेन. बुझियला. तापर लोअर एब्डोमेन एंड दी limbs. Yes. Okay. सेमती जो मानकर लांज अछि हमर तो नहीं. इट्स वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. बट नॉन प्राइमेट्स लोग जिनका पूंछ है, तो ताको केस कोन आसीबो. हेड आसीबो. ठीक अछि. थोरैक्स आसीबो, एब्डोमेन आसीबो एंड टेल आसीबो, व्हिच इज पोस्ट एनल टेल. बुझि पालो. तो बॉडी को हमें डिवाइड करि पाछे इनटू सेगमेंट्स. Clear? Or parts. Now, this is what you call segmentation. Segmentation दुईटी प्रकार हमें नहीं पारिबा. एक external segmentation, आ गोटिए internal segmentation. Means जोटी बाहरु डिवाइड हेतिबो से माने ले external segmentation. जेमती फॉर एग्जांपल arthropods. Arthropods मानकर like cockroach etc. एमानकर केवल external segmentation. Means बाहरु तमे कहि परिबो कि एटा हला तमरो हेड, एटा हला तमरो नो thorax, एटा abdomen. ठीक अछि. Because of the chitin deposition, chitin पाइकी तादर तमरो नो different structures form with the sclerites कोइ दो. जेथरे तमरो tergites, sternites, pleurites part करी हेता. So that is external segmentation. तो बाहर हेता है. Internally there is sinuses etc. which are not divided. Internal जेमते कि आमर. ठीक है जी. आमर ours is internal. इसमें क्या हो गया. जेमती फॉर एग्जांपल हमारा हेड is different to that of our neck. So head section completely अलग आएगा. So it is divisible internally. भीतर divided. बाहर division का कोई भी निशान नहीं है. You cannot say go to divide from the outside. ठीक है. Similarly, thorax region is separate from the abdomen by the diaphragm. So diaphragm रहिला मझिरे, ऊपर डाला thorax, तळ डाला abdomen. So जेहेतु ए no division गुड़िको internally हेची, आपको internal segmentation कुहा गला. Okay. So in case of higher animals like vertebrates etc. internal segmentation. Now, jodi in any scene duiti jako, that is external plus internal missi jaye, means both are there. If both external and internal are present together, tahale ame yaku kahiba metamerism.
ठीक अछि एंड मेटामॉरिज्म रा आउ गोटे यूनिक जिंस हला मेटामॉरिज्म इज ट्रू फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन हला काहेकि एट देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनालिट माने अर्थवर्म रा एटी एगुडा जो देखो तमे एगुडा को कहैता सेगमेंट्स दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स एटा गोटे सेगमेंट सो दिस इज वन सेगमेंट सेमती एटा आउ गोटे सेगमेंट एमती ठीक अछि तो ये केवल बाहर डिवाइड करनी बाहर भीतर पर्यंत मध्य कंप्लीटली ए पूरा रिंग लाइक सेगमेंट ही बाहर के आसपरियो एंटायरली बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली ठीक है सो दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन एंड मेटामॉरिज्म रे आउ गोटे जिंस कोन पाइबो दैट segment हिसाब रे the parts are also repeated the parts are repetitive in segments ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ metameres okay ବୁଝିହେଲା ରେ the segments are repeated continuously fine I hope you have understood yes nematoda and ash elements are considered to be same yes considered to be same but exactly classification if you देखिबो then ଆମର ପାଠ ପଢାରେ means at your level ଆମେ nematodes को and ash elements को same कही थाउ same मानी की चल but actually they are not ठीक है तमे तो क्लासिफिकेशन करिवो क्लासिफिकेशन रो कैटेगरीज अछि ओके कैटेगरीज अछि तो जैसे नो फॉर एग्जांपल ash elements is a big category ता भितरे बहुत गुडी का सब टाइप्स अछंती लाइक नो trematoda nematoda etc so they are one category right so they are not exactly same kintu ame roundworms nematodes nematoid elements ash elements emanku gote category re pakai deiki kortho means amo jetiki पाठ पढ़ार स्कोप अछि in our no first year 11th तो सही हिसाब रे एका भाभी चलाओ ओके बट एक्चुअली नॉट सेम हाउ इज दैट क्लियर फाइन देन कम्स एक क्वेश्चन क्या पूछा रे मीजोग्लिया ओके नाउ सी in case of certain organisms like the Porifera cylindrata ठीक है एमानकर Porifera हला व cylindrata हला outer रहिला ectoderm भीतर रहिला नो endoderm in case of cylindrates that is cnidarians and ctenophora जो मानकर tissue grade organization अछि ठीक अछि तो सेही केस रे outer ectoderm and inner endoderm मझिरे mesoderm तो नहीं there is no mesoderm but is that place empty a vacuum किछि नहीं को सेठी no वहां पे there is presence of undifferentiated mass of cells or matrix ठीक है substances तो अच्छी तो जेहेतु that particular mass of undifferentiated cells ठीक है or matrix or substances is present ताकू हमें कही थाउ mesoglea बा mesenchyme mesoglea और mesenchyme हमें ताको mesoglea कहिबो ओके और mesenchyme मध्य कहि परिबो
Is that clear, Srishti? Yes. Okay. चलो बढ़िया है बच्चा. I hope each and everyone has now received certain clarity. जो पूर्वर concepts ला, I have already wrapped that up also. Revision मध्य तुम्हारा ही गला. ठीक है. अब अपने टॉपिक में कूदेंगे. Now today's topic is the phylum Porifera. Okay. ठीक अच्छी. बढ़िया है. Fine. Okay. Now, the term Porifera. आपको Porifera તમે देखो पारछो ए चित्र रे. This is Porifera. Now, why do we call Porifera Porifera? Yes. Yes. Porifera को बाबूरे Porifera कहीं कहवा हमें. Why do we call it Porifera? Yes. Mesogia diploblastic. Mesoglia is not diploblastic. Mesoglia is normally found in diploblastic organisms. बुझले रे. Because it has pores due to the presence of pores. Yes. Shabash bachcha. Very good. अरे वाह. धन्यवाद. Okay. Because they are pore bearing organisms. सही है. ठीक है. Fine. Absolutely correct. Since if you look at the term Porifera, pori implies pores. The pori implies pores. Fera implies bearing. So, those animals that have pores in their body or are pore bearing animals, they are referred to as Porifera. ठीक अच्छी. Okay. Now, आमे ए Porifera रा कौन जिनस गुड़िक देखिबा बा ऑब्जर्व करिए. लेट्स सी. देखो. First, grades of organization. तो सिंपल माने जेतल तमे Porifera पढ़िबो बा Porifera विषय चिंता करिवो. See, why I have made this table for you or sequence for you. तो ए जिनस गुड़िक सपोज फॉर एग्जांपल एटा तमे गोटे खाता रे लिखिलो. ता साइड रे तमर आंसर आसीबा दरकार. जेमते की सपोज तुमको निजे पचार. अच्छा Porifera तो ओके. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन ना सेलुलर ग्रेड. बॉडी सिमेट्री कौन नॉर्मली असिमेट्री. जर्मिनल लेयर्स कौन एक्टोडर्म एंडोडर्म. सिलोम कौन असिलोमेट. हैबिट एंड हैबिटेट कोठी वाटर दैट इज एक्वाटिक. डाइजेस्टिव सिस्टम कौन ना नहीं. रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन नहीं. सर्कुलेटरी सिस्टम कौन नहीं. देन रिप्रोडक्शन कौन बोथ सेक्सुअल असेक्सुअल. यूनिक फीचर्स कौन मोस्टली pore bearing हमारू. They have spongiocele etc. Canal system. Fine. Examples are Syconochi, Leuconochi, Asconochi, Rangonochi, Spongilla achi. ठीक है. Halospongia achi, Deuterospongia achi. Many things are there. Euplectella achi. Got the point? So आमे तोड़े पढ़ू, आमे तोड़े रिवाइज करी थाऊ. तो इसी बेसिस पे करते. गोटे एई भलिया चार्ट टी बा टेबल टी बने देले एंड जेतेबेले भी आमे Porifera मने पके एई हिसाब रे मने पके आर आंसर गुडी का हमको आसुथिबा दरकार. अरे बुझी पालो रे. ग्रेड कौन सी है. ये होनी चाहिए बॉडी सिमेट्री. ये होनी चाहिए जर्मिनल लेयर्स. ये होनी चाहिए. ऑल दीस थिंग्स मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड आपको आंसर आने चाहिए. देन विल से कि हाँ भाई ये चैप्टर रेडी है, ये Porifera रेडी है, इसमें और कोई टेंशन नहीं है. अरे बुझिला
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लास्ट में आती है, वो ये है बच्चा, कौन गिरी, एग्जाम्पल। तो हर सीन के बाद एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। व्हाट द पॉइंट सती भाई, एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखने होंगे आपको। ओके, यूनिक फीचर्स क्या होगा? ओके, बेसिकली आपने ऑलरेडी कॉलर सेल सुना है, कोआनोसाइट्स, यस, फाइन, स्पॉन्जोसील, यस, फाइन। देन different forms of canal system सुनिच, सिंपल, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिक सिस्टम्स। अरे बुझिलु रे, शाबाश। ओके, now look at this, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर है। दैट मीन्स they have only cellular grade organization. What do you mean by this? मान्य है ला that the body contains only a group of cells put together. सेमाने टिश्यू फॉर्मेशन करिनथांती, ठीक है। सिमेट्री कैसी है? मोस्टली असिमेट्रिकल। किछिटा जेमती फॉर एग्जांपल दी बेदिंग स्पॉन्ज हेगला, यू स्पॉन्जिया, ठीक अछि, that can be sometimes symmetric, that is radial symmetry देखियो। germ layers एमानकर नाहंती, why? because they are cellular grade। और germ layers टिश्यू से ना आसिले हबो, टिश्यू तो है ही नहीं, एंड सिलोम भी करना ही तो मैंने सिलोमेट ठीक है। हैबिटेट कहवा एक्वेटिक है, नॉर्मली और मोस्टली मराई नहीं थाती, मींस सीरे समुद्र देखा जाती। सम ऑफ देम कैन बी फ्रेश वाटर, जेमती स्पॉन्जिला। सेडेंटरी माने गोटे जगह रे फिक्स रहिबे, गोटे पर्टिकुलर प्लेस रे अटैच हेक रहिबे सबस्ट्रेटम रे। then either they can remain single, that is solitary, or can remain in a colony, बुझेला, मिसिक रही परिवे। फाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट अछि, काहे कि एमाने जेतु सेलुलर ग्रेड, सो एमाने इंट्रा सेलुलर डाइजेशन देखे दांती। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, अरे सिस्टम आसे बहुत सिंपल सी बात है, दे आर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर ग्रेड है, then how would you find or from where will you get these systems? जेतु सेल इज द बेसिस, ठीक है, टिश्यू तो है ही नहीं, ऑर्गन तो है ही नहीं, तो ऑर्गन सिस्टम को उड़ासी हो। ओके, सिमिलरली यदि हम रिप्रोडक्शन को देखिबा, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली either asexual किंबा sexual। now asexual mode of reproduction में there is no production of gametes, तो fragments गुड़िक parts गुड़िक भांगिबे, and from those broken parts or fragments a new sponge will develop, that is asexual mostly, ठीक अछि। सेक्सुअली कौन आसला? गैमेट प्रोडक्शन करिवे, ओके, से गैमेट गुड़िक बाहर की गोटे स्पॉन्ज रु आ गोटे स्पॉन्ज को जिबे, सेठी फर्टिलाइज करिवे, फर्टिलाइजेशन परे देन लार्वल फॉर्म डेवलप हबो। ए लार्वल फॉर्म दी जाएगी जेतले कोनोसी सबस्ट्रेटम रे सेटल हे जिवो, सेठु तमरो नुवा ऑर्गेनिज्म बा नुवा स्पॉन्ज टी डेवलप हबो।
इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, कुछ नहीं इसमें. एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन कोठी होची रे इंटरनली होची बॉडी कैविटी भितरे. डेवलपमेंट डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ना इनडायरेक्ट काहे की लार्वल फॉर्म दिसुची. बुझियला रे, इज दैट क्लियर? ये जस्ट जनरल कैरेक्टर्स है. तो कौनसी प्रकार रो क्लासिफिकेशन से प्लांट किंगडम हेता हो एनिमल किंगडम हेता हो, ठीक अछि. जनरल फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक अछि. क्यों? सपोज यू नो दी जनरल फीचर्स, तमे जिंस गुडी को इजीली रिलेट करि परिबो, इजीली बुझी पारिबो, ठीक अछि. जदि कोन जिंस बाय चांस भूली भी जाओ, तमे ताको आउ थरे मने पकेले, सपोज सेही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विषय मने पडुनी बट तार जनरल फीचर्स मने अछि, तो यू कैन इजीली गेस और गेट एन आइडिया. हाँ, एटा तो एही कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स राष्ट्री, तो आंकर फीचर्स गुडी को आंको फीचर्स से तो समान थिबो. सो आई कैन rule out these options and probably this option might be the answer. So in that way, general features are of great help. Mujhela, it's you know though these general features, they give you a very good idea about all the other members of that particular group. ठीक है? So इतने जनरल फीचर्स को मन रखियो. जो यूनिक फीचर्स के बारे में आप पूछ रहे थे वो यहां है, देखिए यूनिक फीचर, ठीक है. तो कैनाल सिस्टम मैंने आपसे कहा था. नाउ ऑब्जर्व दिस, ए टू वाटर, यहां से आपकी वाटर एंटर करती है. फ्रॉम हियर द वाटर इज एंटरिंग इनसाइड. छोड़ू, एज यू कैन सी द वाटर एंटर्स थ्रू हियर. तो यही जो स्ट्रक्चर टी अच्छी जहां से आपकी वाटर एंटर कर रही है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द कैनाल. ठीक है, यही पार्ट टी हैला तुमरो कैनाल. एटा ऑल दीज आर कैनाल्स. बाहर रहिला ऑस्ट्रिया, ठीक अछि. एटा ला स्पॉन्जोसील, यह है ऑस्कुलम जहां से बाहर निकलता है, ठीक अछि. सो ऑस्ट्रिया मानकर नो जो ये जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म करछथि, यहाँ पे ये सिंपल है. दिस इज से द एस्कॉन टाइप, माने सिंपल कैनाल सिस्टम. बट देयर आर अदर फॉर्म्स जोटी एही वाली जिनस देखा जीवो. लाइक दिस. ओके, सेठी कोन हो ना, canal can be well branched, ठीक अछि, both externally also internally also. So therefore these canal systems formed by the ostia, spongocele and the osculum together is the unique feature for most of the sponges बा porifera. ठीक अछि, एई देखो लिखा है canal system. ठीक है. हाउ हमें ये जिनस गुडी को देखियो अगेन प्रॉपर्ली. यहाँ पे बस आप जनरल फीचर्स देख रहे, only the general features, the common features. Okay, fine. Spongiocele and canals lined with choanocytes or collar cells, ये यूनिक है. एटा देखो तुम collar cells, fine. इसमें flagella है, microvilli अच्छी, phagosomes अच्छी, amoebocytes अच्छी, whatever. All these things you'll see later. सेइथिपाई कहली, do not miss classes because these are very very important, and especially jehetu tameti audio as well visual and these unique pictures that you see, a pictures gudi ko gotegi no baneva is not so easy. इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है पिक्चर्स को, एंड पिक्चर्स को तुम मानो भाई खोजी की आने की जिनसटा बनेगी तुम सामने रिप्रेजेंट करियो इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. तो therefore when we give so much effort for you people, तो तम माने सेटा को जदी उपभोग करिवो
বা এনজয় করিব and তাদুରୁ ଶିଖିବ and ସେଇଟାକୁ ତମ ଲାଇଫ ରେ ତମ career ରେ नो यूटिलाइज करिवो देन हम लोग समझेंगे भाई हमारी मेहनत हो गई सफल ठीक है सो all of you do not miss classes attend them regularly jaata kuha jauchi class re भलो से सुनो बुझो सीखो एंड ताको अप्लाई करो ओके चलो बढ़िया है नाउ यूनिक फीचर सेटा देखिलो आउ कोन अछंदी बॉडी रे तमरो skeletal system formation पाएगी spicules as you see here are there किंबा spongin fibers are also there ठीक है जी the spicules along with spongyl fibers both together result in providing support to these porifera or sponges okay fine examples में अगर आप देखो तो general examples that you observe in case of the phylum porifera are see cycons spongilla freshwater sponge यूस्पॉन्जिया और बाथ स्पॉन्ज ठीक है ये चीजें आपके कॉमनली फाउंड स्पॉन्जेस में आती है ठीक है जी फाइन ओके तो बेसिकली हमरो नो जब भी आप स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ते हो तो एई जिंस गुडी को भलो बारे क्लियरली न जानिबो बुझिबो ठीक है एक बार फिर से जनरल फीचर्स को रिवाइंड करेंगे एंड देन विल नो अंडरस्टैंड देम फाइन फर्स्ट लेट अस रिवाइंड द जनरल फीचर्स अगेन एक बार दोबारा एंड वंस वी रैप द थिंग्स अप देन विल मूव इनटू द नेक्स्ट दैट इज लीडेरियंस एंड टिनोफोरा ठीक है नाउ तो ए जनरल फीचर्स ही सबुठी इंपोर्टेंट मन रखियो ओके जो जिनस मु कहबी प्लीज नोट इट डाउन and remember them yes now observe they have a cellular grade of organization कौन ना cellular grade organization okay fine यदि cellular grade organization माने कौन cells are present together as aggregate or cluster एका संगरे प्रेजेंट अछंती as aggregate or cluster ठीक है fine now so the organization is cellular grade organization ठीक है then body plan कैसा है yes cell aggregate body plan very important organization of the cellular grade organization and the plan or the body plan is cell aggregate body plan ठीक है जी okay then secondly if we look at symmetry then as I've already told the porifera are asymmetrical means कौनसी प्लेन रे भी तमे आंको दुईटी हाफ रे डिवाइड करि परियो नाही you can't divide them into two equal halves on any plane therefore they are asymmetrical but kichita cases like you have seen the euspongia or spongilla the mostly the freshwater sponge semane बेले बेले रेडियल सिमेट्री मध्य देखै थांती ओके germ layers आंकर नाही germ layers are absent काहे की absent why absent
as सेल्युलर ग्रेड है। टिश्यू थिल्ले से ना आसियो, टिश्यू तो है ही नहीं, तो सेल्युलर ग्रेड है। ठीक है, सिलोम असिलोमेट है। ठीक है, नो सिलोम इज प्रेजेंट, सिलोम नहीं। अच्छा, सम पीपल से माने कंफ्यूज हे पचारंती, सर आमे कहूचे स्पॉन्जेस मानकर कौन अछि ना सर स्पॉन्जोसील अछि। सो स्पॉन्जोसील रे तो ए लास्ट को कौन लगी सील टर्म लगा हुआ है ना, सिंस स्पॉन्जोसील वर्ड में सील टर्म लगा हुआ है, so therefore it is सिलोम ना, isn't it? yes, लेकिन नहीं, not at all. why? because silom is formed by silom is formed by the splitting of mesoderm। ठीक है, बट एठी ना एक्टोडर्म अच्छी ना मीजोडर्म अच्छी ना एंडोडर्म अच्छी नहीं है। ओके, तो सिलम हमारा चांस नहीं। किंतु तब ये क्वेश्चन उठता है, सर फिर हम इसे स्पॉन्जोसील क्यों बोलते हैं? ओके, नाउ सील माने सील रो डिक्शनरी मीनिंग बा लिटरल मीनिंग कौन? सील implies cavity, seal implies cavity। तो एक सीन रे এই স্পঞ্জ ভিতরে जो सेंट्रल कैविटी टी अछि, सेंट्रल कैविटी टी अछि, एटा काम करता है एज जीवीसी बा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बुझ पालो रे। जेहेतु एटा गोटे कैविटी भली काम करता है and खाद्य digestion, you know, gaseous exchange, excretion, reproduction, all these functions रे साहाଯ୍य करता है। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଭିଟି ଭଳି fluid filled ଅଛି, ଏତିକ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ it is referred to as spongoseal। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ it has nothing to do with the silom। so silom যদি পচরা গলা, poriferans are silomates or acylomates? answer is acylomate। okay, then porifera have a central cavity that performs its functions like transportation, circulation, excretion, gaseous exchange। ठीक है, is termed dash, answer is spongosil। কিন্তু এইটা মনে রাখিব, spongosil is not a silom। clear? okay, fine। 80, one thing that you must see coding here, cellular organization is हम देखुचे, we'll come to that। habits and habitats we have already seen। now 80, हाँ यहाँ पे ठीक है, as you can see this is say the structure of porifera। ठीक ଅଛି, porifera structure ଏଟା। तो आर मार्क करो कि जिनसड़ा आउटर रीजन, ए आउटर रीजन को हमें कौन कहता हूं? यस, पिनाकोडम। मन रख जिनस गुड़िक, दिस इज वेरी यूनिक।
काहा द्वारा थियरी हेची ना पिनाकोसाइट्स ଭିତର ଏଇ ରିଜନ ଟିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୋଆନୋଡର୍ମ formed of choanocytes. Okay, fine, very important. Outer pinacocytes form pinacoderm, inner choanocytes form choanoderm. अब choanocytes case रे 8 देखो जाओ, you'll see the structure, then you'll understand. Here, look at this. এইটা जो बाहर पटे देखो जो এইটা হলো তোমার पिनाकोसाइट्स. ओके, जो भीतर पटे देखो जो वो हो गए तुम्हारे choanocytes. तो choanocytes are also referred to as the collar cells. एगुड़ी कौन को आ जाता है? Collar cells. And that results in the formation of choanoderm. ठीक अछि, मार्क करिवो आंकर फ्लैजेलेटेड एंड्स गुड़िक भीतर पटु अछंती. The flagellated ends are projecting towards the inside. The flagellated ends are projecting towards the inside. बुझेला काहेकि ए फ्लैजेला जेतले बीट करिवे सेमाने ए स्पॉन्जोसील रे थिबा वाटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को गोटे करंट हिसाब रे मूव करि परिवे, एमती पुश करिवे and the circulation is possible. Understood? Okay, now ये सेहिति पाई जेहेतु एते प्रकार कोन सेल्स अछन जा भितरे ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया. ठीक अछि, फाइन, ओके. ओके, आगे बढ़ो. Fine. Now, this is the most important part of the all phyla. Sabu phyla le reproduction is of great importance. Remember, every phyla gives a lot of weightage on the reproduction. Plus, in your NEET examination also, you'll get many questions, many questions on the mechanism of reproduction, and the whether it is internal, external, sexual, asexual, development is direct or indirect. The eggs are क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक, लेसिथल, अनलेसिथल वगैरह वगैरह. ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस होची ना होनी, all these concepts come under reproduction. ठीक है जी, do they show vegetative or asexual mode of reproduction? Okay, sexual यदि अच्छी, then again उसमें भी है, that is they are monoecious, dioecious वगैरह. It is like fertilization जो जेला होची, self fertilization होची या cross fertilization होची. All these questions come, and that's why ये बहुत important बन जाता है. And in fact एमानकर मध्य जो larval forms वगैरह बनते हैं, से larval forms गुड़ी को मध्य हमको मन रखिया पड़िबो, and their metamorphosis हला बेले stages गुड़ी को मध्य मन रखिया पड़िबो. That's why these reproductive mechanisms are very very important. NEET रे बहुत समय रे पचरा जाई थाती these questions. ठीक है, how तो इस पे ध्यान देना. Now when you talk of reproduction, basically दुईटी प्रकार होता है.
रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। यस, कौन से दो प्रकार के होते हैं बच्चा देखो। प्रथमे असेक्सुअल लिया हमने, ठीक है, पहले असेक्सुअल ले लिया हमने, दिस इज असेक्सुअल, then other is sexual. So total two methods are there, asexual and sexual. Okay, now asexual reproduction जो हमें कहूँ छे is basically occurring through fragmentation, ठीक है जी, that is segments or parts are broken or detached from the main body and grow into a new organism. बुझ पालो रे? So that is asexual. So normally कौन होगा? Suppose गुटे piece चे एटू भांगी वाला, भांगी के अलग आएगा। So जोटी से पॉडी के अलग आएगी रही ची, सही जगह रही से धीरे धीरे ग्रो करिया गला गियो। And देखो देखो पूर्ण तरे गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टाइप तैयारी ही जो यही जो प्रोसेस ची हैला, जेहेतु इसमें कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, therefore we call this mode of reproduction as asexual. Asexual reproduction is a mechanism of reproduction where reproductive parts or gametes are not involved, ठीक है, and a single parent is capable of reproduction. Ujela. Okay. Then come to the sexual mechanism. Now basically they are hermaphrodites. Hermaphrodites are माने कौन हो? Hermaphrodite माने हला if the male and the female reproductive parts are present on male and female reproductive parts, ठीक है, male and female reproductive parts are present together, then we call it hermaphrodite. माने गोटिए organism भितरे both male and female reproductive organs present अछंती, ताले ताकू कौन को आजिबो? hermaphrodite. किम्बा आउ कौन को आजाई परिबो? bisexual. किम्बा आउ कौन को आजाई परिबो? monoecious. एक्का जिनस मन रखिबो, hermaphrodite जहा, bisexual सैया, monoecious सैया। अरे is that clear रे बच्चा? Is that understood? Yes, बढ़िया है, ठीक। Now internal fertilization and external fertilization क्या होता है? Now fertilization माने हैला the fusion of male and female gametes, male and female gametes, ठीक है। So fusion of male and female gametes is fertilization. Now because of this fertilization, the both gametes, male gametes, female gametes fuse together. Okay. Now age of insert haba, where will this fertilization occur?
Now, एटी मार्क करो. Sperms are released. ठीक ଅଛି. The male gametes or sperms are released from the sponge. The sponge ରୁ ତମର ଏଗୁଡିକ release ହେଲେ ବାହାରକୁ. Okay. Now, on being released, they will enter into the another porifera, another sponge. Eta gutte sponge sila se X. This is another sponge that is called Y. ठीक ଅଛି. So X ରୁ sperm ବାହାରିଲା and it entered into Y. ठीक है. କୋଉଠି ପଶିବ? ସେମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବାଟେ ପଶିବ. ଠିକ ଅଛି. ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବାଟେ ପଶିକି then it will fertilize. Fertilization ଯେତେବେଳେ ହେଲା କୋଉଠି ହଉଛି? Inside the spongiocele. କୋଉଠି ହଉଛି? Spongiocele ଭିତରେ. जो हमें इंटरनल लिखुचे से इंटरनल का अर्थ ही यही है कि वो किधर हो रहा है ना, स्पॉन्जोसील में हो रहा है. ये तो स्पॉन्जोसील भीतर होची which is present inside the sponges, it is termed internal fertilization. अरे बुझिएला. Okay. Then development is indirect. Fertilization है वाला. Once fertilization is done, then the fertilized egg and the sperm, they are taken out. Bahar ko bahar jaati. Then inside the water, joti hamara habitat, ta bhitare semanakar development hi arambha hoita hai. That development is the indirect development. ठीक अछि. That is basically larval stages ଅଛନ୍ତି. The larval stages present. So the larvae will undergo metamorphosis and develop from young ones to adults. Which palari? That is known as indirect development or metamorphosis. Clear? Okay. बढ़िया. Now, आपको मान लो एक क्वेश्चन पूछा. देखो अच्छा देखिए. The larval forms are known as आंकरो. लार्वल फॉर्म को कौन कुआ जाता है? नो 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 नो. Good. See, mesenchyme, mesoglia, mesohyle, they are basically one and the same thing. Actually, classification of sponges is देखिबो ସେଥିରେ ଗୋଟେ category ଅଛି hyalospongia. Hyalospongia में they are having clear formation of the fluid. देखिए मैं पूरा पूरी clear, काचे वाले clear. That's why known as glass sponges or hyalospongia. तांकर जो मेसोग्लिया टा ହେଇଥାଏ है ताको mesohyle କୁହାଯାଏ. Got the point? यहाँ पे हाँ. अरे शोभित जी, आपने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में पूछा कि सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ फॉर ए अडल्ट हेबो, तापरे लार्वल स्टेज आसीबो, तापरे रिप्रोडक्शन हबो. ये गलत है भाई. इट्स नॉट करेक्ट. व्हाई? देखो इधर ये यहाँ पे मार्क दिस डायग्राम एंड लेट मी शो यू समथिंग. इस डायग्राम में अगर आप देखो तो 80 गैमेट्स माने फॉर्मेशन है कि बाहर गोले. ये क्या है? स्पर्म सेल्स है, मतलब मेल गैमेट्स. दे आर मेल गैमेट्स. These male gametes enter inside the inside another sponge. As you can see here, they have entered inside it.
ये आपकी एग है, that is female. Fine. And these are sperms. Now, inside here, there is fertilization. There is fertilization. Now, fertilization little hella. Con theory hella, zygote theory hella. Bujela, zygote pore con theory hobo, na embryo theory hobo. Okay, এই जो एम्ब्रायोटी हैला से एम्ब्रायो कौन करिवो, it will undergo a series of changes, that is metamorphosis. के करला एम्ब्रायो, आपने बोला कि ग्रोथ करेगा बड़ा होगा, नो, अडल्ट हबो नहीं, एठी एठी जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो लार्वल फॉर्म्स रे मेटामॉर्फोसिस करी डेवलप होबो. Once it has undergone the metamorphosis, then slowly the larval form will start to grow. ये जो लार्वा टी देखो जो तमे एटी ऐसा लार्वा धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ठीक है जी, by cell division. Yes. Now this larval form can have two consequences. जेमती किछिटा केस रे लार्वा कंटिन्यूअसली मेटामॉर्फोसिस हेगी, से फाइनली कौन हे जीवो, मानो मेटामॉर्फोसिस हेगी अडल्ट हे जीवो. ओके, द लार्वल फॉर्म विल डेवलप इनटू एन अडल्ट डायरेक्टली. जेमती हमरो कॉकरोच एटसेट्रा केसेस रे हेता है. तो जेतले जन्म हला कॉकरोच टी निम्फा प्यूपा सी तारो लार्वल फॉर्म रे मेटामॉर्फोसिस हेकी अनो 13 अनो मोल्टिंग्स करिवो बा 13 थरो मेटामॉर्फोसिस करिवो. जेतले 13 थरो मेटामॉर्फोसिस सरला देन अडल्ट स्टेज मिलियो तब. बट यहाँ पे वो नहीं होता. एठी ए लार्वा टी ठीक अछि एई भली थिला. You can observe एटा गोटे लार्वल फॉर्म सही मेटनो फर्टिलाइजेशन पर एची, बट एठी आ गोटे लार्वल फॉर्म अछि. ना ये और ये कैसा है, डिफरेंस क्या है, एठी तो मैं देखि पारथिबो ए लार्वल फॉर्म रे मध्य सिलियरी बा फ्लैजेलर स्ट्रक्चर्स अछंती दैट हेल्प देम इन मूवमेंट. तो काहे कि ये बे स्पॉन्ज रु बाहरी आछंती, जोटी फर्टिलाइजेशन एचा सेटू बाहरी आछंती. सो नाउ दे आर इंडिपेंडेंट. तो ये इंडिपेंडेंट होके जाकर सेटल होंगे कोठी, कोनोसी गोटे सबस्ट्रेटम रे लागी जिवे बा सरफेस रे लागी जिवे. एंड सेठी धीरे धीरे जेमती मंजी पड़िले गछ हेची, ठीक अछि, ता चेरो एटसेट्रा दे विल grab that particular surface and start growing. तो एई जो जिंसटी हैला एइटू एइटा हैला लार्वे, एइटा हैला अडल्ट, अडल्ट पर एइटी आसला मैच्योरिटी, मैच्योर हैला पर जाईकी से माने स्पर्म्स और एग तैयारी करे. अरे बुझिलु रे बाबा, बुझिया. डायरेक्ट कौन होबो. ओके, डायरेक्ट इंप्लाइज जैसे हमारे केस में होता है, माने थरे तरह फर्टिलाइजेशन हे गला, जाइगोट तैयारी हे गला, जाइगोट हैला परे सबु जाक डेवलपमेंट एका संगे रे हे जीवो, माने फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स एका संगे रे हे जीवो. ठीक अछि, हाथ गोड़ मुंड पेट नाक सबु एका संगे रे हे जीवो. हैला परे हमें जन्म होबा, बुझेला. डायरेक्ट डेवलपमेंट रे लार्वल स्टेजेस आउ नाही, मींस डेवलपमेंट एका संगे रे होबो and complete development hella pore hi, then the child will be born. Okay,
and तापरे केवल तार growth etc will happen, but आउ कौन सी नुआ जिनसर formation होबो नहीं, but जेतले indirect development होउची step by step रे, no every metamorphosis रे किछिटा नुआ जिनसर formation हे चालिथिबो. Got the point? So therefore, normally direct development occurs completely at a single flow, in a single flow. Indirect development re, step by step re, different sequences re, formation heithanti. Okay, and normally dekhibo, in case of indirect development, the larval form and the adult form are very different. Jemti for example, bengo dekhicho, frogs, frog manankara ଯେତେବେଳେ larval forms ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ tadpole. ଠିକ ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା, ସେମାନେ ପାଣିରେ ଏମିତି ମାଛ ଭଳିଆ ପହଁରୁଥିବେ. but जब adult हो जाएंगे after metamorphosis ताले नॉर्मल बेंगो वाला दिसिबे. नॉर्मल बेंगो को रखो और से जो बेंगो फुला को देखो, दोनों में बहुत डिफरेंस है. फाइन, you sometimes people mistake the bengo fila with the tadpoles with fish, macho, but actually वो fish है ही नहीं, वो क्या है, amphibian है. so यही जिनसे गुड़ी को are differences between direct and indirect development. अरे बुझिला रे, is that clear? ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है. सो एक काम करो रे बच्चा, डायरेक्टली लार्वल स्टेज नहीं. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, शाबाश, सही बोला, गुड. Larval stage is not present in case of direct development. Absolutely correct. शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी नाइस. ओके, अच्छा, हाँ. तो ये रही आपकी development etc. My question to you people was, can anyone here tell me the name of the larval stage, the name of the larval stage of the porifera? porifera रो larval stage रो नाटी कौन मते कही परिबो कि कौन बोल सकता है, बताओ जल्दी बताओ. yes, who can tell the name of the larval stage of porifera? porifera रो larval stage रो नाटी को what do you call it? देखिए कि कोई पर्ची, देखिए कि कोई पर्ची. यस, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो. वाह, शाबाश, एम्फीब्लास्टुला. अच्छा, ओके ओके ओके. पैरेन्काइमुला, awesome, good. Parenchyma is correct. Amphiblastula is also correct. Awesome, very nice, very nice. Sorry. एकदम ठीक, एकदम ठीक. ठीक है, एम्फीब्लास्टुला हो सकता है, पैरेन्काइमुला हो सकता है. Some, no, even certain cases रे planula larva is also observable. Now basically कौन की हमारा in case of the porifera बा sponges larval stages ची ना observe करिया very difficult. Normally कौन करा इता है, self fractionation techniques use करके अगर larval stages को study करा इता है. तो सेठी पाई बहुत माने सहजरे देखा जीवनी, it's difficult. That's why
आपको लार्वा स्टेजेस आपकी एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन नहीं करता, बट anchor larval stages are these: parenchyma hyperivo, amphiblastola hyperivo. ठीक है सर, tadpole larva will not represent the larva stage. माने किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं प्रतीक्षा जी? Tadpole larva will not represent the larva stage. Is that a question or a statement? अरे मामा प्रतीक्षा, ये क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है? एंड अगर क्वेश्चन है तो किसकी रेफरेंस में है? आई एम नॉट एबल टू गेट द क्वेश्चन एक्चुअली। यदि पचार टैडपोल लार्वा लार्वा स्टेज की नुहे, आंसर इज यस, tadpole larva is a larval stage. Then the second thing is, यदि एटा पचार कि tadpole larval टी Porifera रो larval stage की नुहे, then yes, एक चीज ये जान लो, tadpole larva is not actually a larval stage of Porifera. It's not a larval stage of Porifera. Jehetu some cases re, certain forms of larvae in case of Porifera may resemble shape of a tadpole. Jemti, for example, I'm sperm to the tadpole larval से तो compare करता हूँ. But does that mean that sperm is a tadpole larva? No. So basically tadpole काहे को है? Because of its shape, formation. ठीक है, but tadpole definitely is a larval stage. ठीक है, फाइन, चलो बढ़िया है. ओके, तो एक काम करो, Porifera is done, take a small break. ठीक है, and then in 10-15 minutes we'll start with the next part, that is Cnidarians and Ctenophora. ओके, चलो, थैंक यू बच्चा लोग, एंजॉय, कम बैक सून. फटाफट जाओ, फटाफट आओ ब्रेक लेके.